So hello everyone. In this series, we are going to discuss about what is window sliding technique, and like this is very useful as a two-pointer approach, and this looks very similar. But here we have a big difference on that. So first, what we have to do, we just type the our concept here. What is we are going to study window sliding technique. Yes. So suppose that I'm giving you an array. 2, 7, 9, 10, and 7. So this is an array, and I'm giving you the a number which you have to find the sum. Like I'm giving you k2, and what is k here? K is here. Like मैंने आपको आपको k में क्या करना है, आप किसी भी आपको in that array you have to find the two values like these two, and from 6 to 9, 9 to 10, 10 to 7. I think you understand a little bit कि आपको कोई भी दो दो नंबर का सब एरे, yeah, a sub array with the length of 2. I think you understand what is the sub array. So, and I'm trying to understand this again. So in this question, what you have to do, we have to find this we have to find the sum of sub array. I think you know that what is sub array. Sub array is similar to string of k size. Yeah, now the question is exactly what I want to say. You have to find these sub arrays. Like what are the sub arrays here? First is 2, 6, 6, 9, 9, 10, 10, 7. You have to find this all sub array which is the length of 2. So what we have to find to length of sub array. So हम पे क्या क्या तरीके हैं फाइंड करने के. So first जो हम पे तरीका है बहुत कॉमन है, वो है हमारा ब्रूट फोर्स. ब्रूट फोर्स में हम क्या करेंगे, हम जितने भी जितने जो एरे है उन सब के हम क्या निकाल लेंगे, हम सबके लेंथ निकालेंगे. देन हम क्या करेंगे उसमें कि जो भी हमारा 2 सब एरे होगा फिर हम उसमें से उसको निकालेंगे. देन वी ऐड this sum. So how can we do? We just simply do. So suppose first क्या हम पे हम पहले 2 निकालेंगे. 2, 2, 6, 2, 9, 2, 10, 2, 7. तो ऐसे ही करते करते हम पहले 6 निकालेंगे. 6, 9 so wait. या 2, 2, 6 फिर निकालेंगे हम 2, 6, 9, क्योंकि हम यहाँ पे सब निकाल 2, 6, 9 फिर 2, 6, 9, 10. सेम इसके लिए भी हम करेंगे, इसको 2 से लेकर 6 तक घुमाएंगे, फिर इसको निकालेंगे हम 6, 6, 9, 6, 9, 10,
So हमें इसमें कौन सा साइज चाहिए, हमें चाहिए 2 साइज, but we are what we are doing through brute force, we are find unnecessary, you know, unnecessary these things. We don't want these things. We just want uh, the length of sub-array should be k. K like in this question k is 2. So we just find कि this यार यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, और अगर मैं इसको सिमिलरली बोलूँ कि अगर मेरे पे लेंथ यहाँ पर कितनी है, 3 है, मे बी आप कंफ्यूज हो गए होंगे, 2 में, अगर मैं 3 करूँ, so what we have to first find out the length. We just find out the first यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एंड यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एंड यहाँ से यहाँ तक का सम. So in this way we can do this question. So let's try to do this question. So first we first हमें कहाँ क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि हमें कहाँ तक निकालना है, हमें उसकी जो लेंथ होती है, या यस, हमें क्या निकालना है, हमें पहले फर्स्ट के साइज का एलिमेंट्स का सम निकाल देना है. तो हम कैसे निकालेंगे इसको, फर्स्ट के साइज sum of array. So we just do for where I is equal to में 0 I क्या होगा, लेस देन k प्लस k प्लस प्लस. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम प्लस like I wrote this, you can also write this sum plus array I as you wish, you can do. यहाँ पर आप क्या करते हैं, console dot log sum, और यहाँ पर sum is equal to में 0. तो आप वेरिएबल में इसको स्टोर कर सकते हैं. So let's print this question. Yeah, we get 17 here, and you can sum these three things, 2, 6, 9, and yeah. So now what we have to do is, first हमने क्या करा, हमने k एलिमेंट के सम निकाल लिया. अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट नो जो हमारे रेस्ट ऑफ के साइज बचा है, मतलब k टू n साइज, सम ऑफ k टू n साइज. तो यहाँ हम क्या करेंगे, जस्ट हम एक और लूप चलाएंगे, फॉर वेर इज इक्वल टू में j इज इक्वल टू में k, j कहाँ तक होगा, j होगा n तक, प्लस k प्लस प्लस. सो तो अब हमें वी हैव टू डू नथिंग, जस्ट हमने जो सम प्रीवियसली निकाला है उसमें से हमें क्या प्लस करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा जो एरे ऑफ j होगा, एंड उसमें से हमें कुछ निकालना भी पड़ेगा. वी हैव टू जस्ट रिमूव array of what is the difference between them. I think the difference is j minus k. Yeah, let's print this console.log sum. So yes, you can take this as what we get. N is not defined here. Okay, array.length. Array.length is here our. So we are getting 17, 25, and 26. So let's
you know, let's add these things. सो अगर हम इसका प्लस करें तो कितना आएगा हमारा, ये हमारा 17 आ रहा था, और हम फिर इसमें से करें ये 27 माइनस 2 25 आएगा, यहाँ से यहाँ तक का 25 आएगा। और ये अगर 25 है, उसमें से हमने 6 हटाया तो 19 आया, 19 में करा तो ये आ गया हमारा 26। सो देन वी कैन गेट देवर सोल्यूशन। तो ऐसे ही हमारा विंडो स्लाइडिंग वर्क करता है, एंड दिस इज अ वेरी यूजफुल कंसेप्ट। सो if you not understand still, you can rewatch the video, and definitely you will uh, grab this. So it's a very easy concept, and you can also try this question first in any lead code or OJ platform by using brute force, and this will work. But if the time, if our the length, if they were n, what is n here? N just array dot length. If our n, is under or like is less than or equal to 10,000, it will work the brute force. But if we are uh, no if we are like if suppose n is greater than 10,000, then this will not work, and that's why we are using the window sliding technique. So that's it from my side, guys, for today. So thank you so much for watching this video, and I hope you like this concept.